Hello everyone, welcome back to my playlist of SQL Server Practical. Previous video में हमने डिस्कस किया था लेफ्ट आउटर जॉइन and in this video we will discuss the concept of right outer join. As you know, we were working on the tables product and customers from e-commerce database. So again I'm continuing with the same table for your reference, easy reference. सो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि लेफ़्ट जॉइन लेफ़्ट टेबल से सारा डेटा फेच करता है एंड राइट में नल फिल करता है एंड राइट जॉइन इज़ द वाइस वर्सा ऑफ द लेफ़्ट जॉइन. सो इट विल पिक all the records from the right table but matching records from left table plus not matching records will be null. So you can check the syntax here and as well you can follow the syntax to write the query. So if I write the query for right join, same pattern I have to follow. Select star from what is my left table, products is my left table, then I want product ID to be fit. Select star from yes table 1 products ID. Let us see, error बाद में देख लेंगे. Then again products dot product name comma then product customer table से we want the name of the customer. So customer first name is the attribute first name and join किस पे करना है हमें, सेलेक्ट ओके मैंने मिस्टेक कर दिया बिकॉज हमें सारे ही एट्रीब्यूट्स चाहिए तो वी डू नॉट नीड टू राइट दिस एट्रीब्यूट नेम्स. राइट जॉइन एंड देन कस्टमर्स बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर स्टार भी मेंशन कर दिया और साथ में मैं एट्रीब्यूट्स के नेम भी देने लग गई. सो मेरी क्वेरी एरर शो कर रही थी. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स इज द लेफ्ट टेबल. what type of join I am doing, right join, and table 2 is customers. You can check the query for your reference, syntax for your reference. On what is the common attribute, now products में common attribute है हमारा product ID. So same pattern से हम query लिखते जाएंगे. Equals to customers dot customer product ID. सो इस क्वेरी को मैं नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करती हूँ. नाउ इफ़ आई रन दिस क्वेरी, सो आप देख रहे हैं कस्टमर टेबल मेरा है राइट. जो भी टेबल मैं राइट जॉइन के बाद लिखूँगी दैट विल बी ट्रीटेड एज माई सेकेंड टेबल एंड जो भी टेबल उससे पहले लिखूँगी दैट विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट टेबल. सो आप कोई भी टेबल लिख लो आगे पीछे, वो लेफ़्ट राइट अकॉर्डिंगली पिक करेगा. सो एज़ यू कैन सी हमने राइट जॉइन किया तो सारे कस्टमर्स जो थे उनकी इन्फॉर्मेशन आई, इवन अंकित. बट अंकित ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया था तो प्रोडक्ट जो है हमारे पास नल आ गया. सो एज़ यू कैन सी नाउ लेफ़्ट जॉइन में राइट साइड नल आया, राइट जॉइन में लेफ़्ट साइड नल आया. प्रोडक्ट आई डी इज़ कॉमन तो दैट्स वाई प्रोडक्ट आई डी में यहाँ भी नल आया. क्लियर? सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ राइट जॉइन. नाउ कॉफ़ी मेकर प्रोडक्ट भी हमने किसी कस्टमर को असाइन नहीं किया था तो कॉफ़ी मेकर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी इस टेबल में नहीं आएगी. सो दैट मीन्स कस्टमर टेबल information of all the customers is given plus matching data of products is given. Yes, if any customer has not ordered any product, so that information is filled with null in the left table. So this was the concept of right join. So again, if I modify this query to fetch only some of the attributes, so how I will do, products dot what attribute I want, product ID comma products dot product name comma customers dot product ID. So this is the
query, modified query. Let me modify it to the next line so that it is clearly visible to you. So now कुछ specific attributes ही हमारे पास आएंगे. So as you can see here, customers, but इसमें customer information नहीं आई. Let me check what in. Okay, I haven't given the name of the customer, right? So customers dot first name. So इसीलिए नहीं आई कस्टमर की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट आईडी ही आई खाली. So as you can see, all the names of the customers, even if the customer has not ordered any product, his information is present. So dear students, this is the concept of join, which is very easy to remember. Just remember, left join है right में null, right join है left में null. That is all for this video. If you like it, please share and subscribe.